Hello students, I am your Zed sir, welcoming you in the new part of the chapter number 6 life process for standard 10 science and technology. Last video we had understand about respiration, okay, respiration in human and respiration in plants. Then after there is work of transportation. एक बार रेस्पिरेशन हो गया, उसमें से एनर्जी मिली, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना एक जगह से दूसरी जगह पे. ट्रांसपोर्ट का मीनिंग सिंपल होता है, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट वन थिंग टू अनदर, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट वन सब्सटेंस टू अनदर. ओके, एक जगह से दूसरी जगह भेजना मतलब ट्रांसपोर्ट करना. सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन. सो टुडेज आवर की पॉइंट्स आर ट्रांसपोर्टेशन, then after we will study the transportation human, then we will go through heart, then after transportation in plants, then we will come on to the xylem, then after phloem, then excretion in human being and plants. So let's start. So first is transportation. Transportation, as I told you, we will transport from one place to another. Clear? So coming on to transportation in human. So blood is a connective tissue in humans. It transports necessary substance to cells and transport metabolic waste product away from those same cell. Yes, here the very important part playing by blood. So blood is transporting energy and it also removing the metabolic waste from the same cells. Clear? So which are the main component of bloods? So main component of bloods are plasma, red blood cell, platelets, then after white blood cell. So start from first, plasma. So what is plasma? It is a one type of component of blood only. So plasma, it is yellow in color. अभी आप देख रहे हैं ना कि कोरोना के वजह से दिल्ली के अंदर प्लाज्मा डोनेशन चालू हो गया है ना. So plasma, what plasma content, why they are transmuting or you can say donating plasma from our blood? So plasma content, it is one type of fluid only. The color of the plasma is yellow. So it transport or you can say it has food, carbon dioxide and waste product, etc. Clear? So plasma, it is nothing but it is yellow in color. It transport food, CO2, waste product and etc. Then after coming on to the red blood cell, you can also call as a RBC. So RBC, it contain hemoglobin which transport oxygen. Yes, now how the oxygen is transmitting from one side to another side in our body, it is because of the hemoglobin which is present in the RBC. Clear? Then after platelets. What is platelets? So this help in blood clotting. Okay, जो blood clotting के लिए ये काम आता है. So what is blood clotting? Blood clotting means blood को जमा देना, वहाँ पे इकट्ठा कर देना. For example, when there is a cut on your finger, at that time, थोड़े टाइम के बाद आपके जो हाथ पे जहाँ कट गया था वहाँ पे ब्लड जम जाता है. ठीक है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स. अगर ज़्यादा ब्लड निकल गया, इफ द मोर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम योर बॉडी, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग. Okay, so the platelets clotted the blood over there. So when the human get damaged on his body, due to that blood flow from its body stopped by the platelets. Now coming on to the next point, that is WBC. WBC means white blood cell. So these cells fight against the harmful bacteria, virus and germs. So the cells also consist a WBC, that is known as a white blood cell, जो क्या करते हैं, जो लड़ते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से और यू कैन से वायरस से और जर्म से आपकी बॉडी के अंदर. दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट इम्यूनिटी बढ़ाओ. इम्यूनिटी बढ़ाओ मीन्स व्हाट हैपन, वाइट ब्लड सेल की जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी जर्म्स के साथ लड़ने की, वायरस के साथ लड़ने की, वो अच्छी होती है. हाउ द
वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी इंक्रीज. हाउ द इम्यूनिटी इंक्रीज? इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो वाइट ब्लड सेल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. तो कैसे होता है? विटामिन सी लो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, योगासन करो तो अच्छी आपकी हेल्थ रहती है. विटामिन सी का सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? लेमन में बहुत अच्छा रहता है, आंवला में होता है. लेमन मतलब नींबू, तो नींबू का जूस पी लो, नींबू रस पी लो, नींबू पानी पी लो, जो आपको पसंद है वो पी लीजिए. एज आयुर्वेदा बताता है कि आपको दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा यू हैव टू ड्रिंक ए नींबू पानी, यू हैव टू ड्रिंक ए नींबू जूस. ओके, नाउ द क्वेश्चन राइज, हाउ द blood traveling from one place to another? If I want to transport my subject from one place to another, if I want to go from Diu to Una or Una to Diu, I have want a one transporter. So I will not go through my leg, I will go through a bike, or you can say any truck, or you can say bus. So here and the truck want a fuel. That fuel will give energy to the truck and we will come here to the. Similarly here the heart pumps the blood from the blood vessel. So here the heart is playing a very important role, that it pumps the blood. So blood can move from one place to another. So let's read what is heart. So there is a diagram on your mobile screen. See, heart is a muscular organ. Heart is a muscular organ. It has two sides. Which side? It has two sides that is separated by a muscular wall. ये देखिए 2 साइड है, ये muscular wall है, इससे सेपरेट किया गया है. ओके, then after it has 4 chamber. The chamber is left atrium, after left ventricle, right atrium and right ventricle. Clear? These are the 4 chamber of the heart. Let's read the diagram. What the diagram told us? अब देखिए यहाँ पे the right atrium से क्या होता है, जो the carbon dioxide rich blood will enter from the right atrium, then after it go through the right ventricle. Okay, then after this right ventricle, from right ventricle all the blood is transported to the pulmonary arteries. Okay, then after from there the oxygen rich blood will come from veins, pulmonary veins, or you can say veins. Then after it comes to the left atrium. From here it comes to left atrium. Then after it go through the left ventricle, and from left ventricle it go through a aorta. ये aorta है, वहाँ से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड बाहर आता है, एंड इट ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. Now here there is one thing that I have to told you, that is a vena cava. Vena cava जो यहाँ पे है, okay, it's a superior vena cava from where the blood which is carbon dioxide reached from your upper body that enter from the superior vena cava, or you can say upper part from the vena cava. Clear? Now here we had understood that how the heart is working, means from the diagram. Now let read the slide. Now how heart work? So deoxygenated blood. Deoxygenated blood means carbon dioxide rich blood, the blood which have carbon dioxide, that come from body to right and एट्रियम, विच आई टोल्ड यू. सी हियर राइट एट्रियम. कहाँ पे राइट एट्रियम है? यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है. देन आफ्टर when then pump to your lungs, by right ventricle through arteries, where it drops carbon dioxide and carries oxygen. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो
ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो राइट एंट्रियम से कहाँ पे जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, देन आफ्टर इट गो आउट फ्रॉम द आर्टरीज, ओके, और कैन से पुल्मोनरी आर्टरीज, देन आफ्टर दिस गैस इज और यू कैन से ब्लड इज गिवन टू द alveoli, देन alveoli से कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, एंड देन आफ्टर इट रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर नोज। क्लियर। अब यहाँ पे कैरी द ऑक्सीजन आया, मतलब क्या हो रहा है, योर ब्लड विल बी एक्सचेंज फ्रॉम द alveoli surface, you will give your carbon dioxide reached and take the rich oxygen from the alveoli and again transmitted to your heart। अब हार्ट में कहाँ से आएगा ऑक्सीजन, सो फ्रॉम हार्ट ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम पुल्मोनरी वेन्स, ओके, पुल्मोनरी वेन से, ये देखिए यहाँ पे पुल्मोनरी वेन से यहाँ पे ब्लड आएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो पुल्मोनरी वेन से आता है। Then after it entered to the left atrium which is the left side, this is your left side, okay, ये upper part है वो left atrium में आता है। Then after it go to the left ventricle and further it go to the aorta। So let's read, then oxygenated blood which is oxygen rich blood come to the left atrium through veins which then pump to body part by left ventricle through aorta and it reach all parts of body cell। Clear? यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Now coming forward, so we have blood vessel। Blood vessel means what? From where the blood travel। There are two types of blood vessel. First one is the arteries and second one is the veins। So what is the work of arteries? This carries oxygenated blood from heart to body। यहाँ पे आर्टरीज का काम क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ब्लड हार्ट में से और आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करती है, पहुँचाती है। कौन? आर्टरीज। एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे देखिए हार्ट में जो पुल्मोनरी आर्टरीज होती है, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट है, ये पुल्मोनरी आर्टरीज है, वही एक्सेप्ट दिस, यही है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच, सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ही सिर्फ कैरी करती है। बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो क्या करती है, ओनली कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? सो आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक। थिक मतलब थोड़ी मोटी होती है, इलास्टिक मीन्स थोड़ी आप बैंड जैसे तैसे उसको बैंड हो सकती है वो अच्छे से। द स्मॉलेस्ट वेसल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। अब कैपिलरीज किसको बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, वेसल होता है, जिसकी थिकनेस होती है वन सेल जितनी ही, उसे बोलते हैं कैपिलरीज। ओके, नाउ कमिंग ऑन वेन्स। वेन्स किसको बोलते हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। अब वेन्स का काम यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसके अंदर, जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो वो कौन कैरी करता है, वेन्स। वेन्स क्या है, वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी वेन्स ओनली कैरी द ऑक्सीजन रिच। ये देखिए आप यहाँ पे ये पुल्मोनरी वेन्स दिख रही है, दिस वन, यही एक है जो ओनली ऑक्सीजन रिच को लेफ्ट एट्रियम में डालती है। अदरवाइज जितनी भी वेन्स होती है वो सब के सब क्या करती है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आपके बॉडी पार्ट में से लेती है। क्लियर? दिस आर थिन एंड इलास्टिक। दिस वेन्स आर वेरी थिन, बहुत पतली होती है एंड इलास्टिक होती है। आई टोल्ड द मीनिंग ऑफ इलास्टिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिम्स। लिम्स किसको बोलते हैं, लिम्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। ओके, ट्रांसपोर्टर फ्लूइड ही है ब्लड की तरह। क्या है,
The pores present in the wall of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape into the intercellular space in the tissue to form the limbs. How the limb formed? Limb formed because of the pores which is present into the capillaries. जो capillaries में जो pores होते हैं, छोटे छोटे खड्डे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें से प्रोटीन, ब्लड, प्लाज्मा, वो क्या होता है, सब बाहर आ जाते हैं. देन आफ्टर दे कम एट द प्लेस बिटवीन द सेल. ये सेल होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्पेस होती है वहाँ पे इकट्ठा होते हैं एंड दे फॉर्म द लिम्स. ओके, दे फॉर्म द लिम्स. सो दिस इज कॉल्ड ए लिम्स. दो सेल के बीच में जगह होती है, वहाँ पे इकट्ठा होता है. क्या इकट्ठा होता है? प्रोटीन, प्लाज्मा, ओके, एंड ब्लड सेल वहाँ पे इकट्ठा होते हैं. कहाँ से आते हैं? कैपिलरीज में आते हैं. कैपिलरीज में कहाँ से आते हैं? कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से आते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स थोड़ा और जानते हैं लिम्स के बारे में. इट इज़ कलरलेस. द लिम्स डोंट हैव एनी कलर. लिम्स absorb and transport fat from intestine. From intestine, that limbs transport the and absorb the fat. Clear? It drain away the excess tissue metabolism. Okay, ये क्या करता है? लिम्ब दूसरा क्या काम करता है? वो जो टिश्यू होता है जिसमें एक्सेस मेटाबॉलिज्म टिश्यू होता है, मतलब जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, उसे भी ड्रेन आउट करने में हेल्प करता है ब्लड की. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अभी यहाँ तक अप टू हियर वी हैड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ heart is playing very important role to transport the carbon dioxide out from the body and take the oxygen into our body and to give oxygen to different parts of our body. यहाँ पे we had understand the left atrium, that is very important role play by left atrium and left ventricle, and right atrium and right ventricle are the four chamber. Okay, from veins, pulmonary veins, यहाँ से oxygenated blood आता है. कहाँ पे आता है? left atrium में. then after from left atrium the oxygenated blood go to the left ventricle and through a aorta it go out and spread it to different parts of body. and then after जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो राइट एट्रियम आता है. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल. देन आफ्टर इट गो आउट फ्रॉम pulmonary arteries to lungs and then out from the nose. Then after we come to know about arteries playing very important role. Okay, then after veins and then after limbs. Then coming on to the next point, that is a transportation in human. Transportation in human we had completed. Now transportation in plant. So there are two transporter tissue in the plant. Okay, the two transporter tissue are in the plant. They are xylem and phloem. Okay, xylem and phloem are the two transporter tissue in the plant. So what is the function of xylem? It transport water and minerals in upward direction from roots to highest point of the plant. The function of the xylem tissue, it performing the function such like that it transport the water and the mineral from the roots to the upper part of your plants. Okay, it only transport upward. Xylem is only transporting the water and mineral from lower position to higher position. Clear? Third point, it work on the principle of transpiration. Xylem is working on the principle of transpiration, that you know very well what is transpiration. Okay, then after coming on the second tissue, that is a phloem. So phloem is nothing, it transport food from leaves to other part of the plant. phloem क्या करता है? वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. एनर्जी जो प्लांट को जो मिलती है, ठीक है, वो क्या करता है? एनर्जी मिलने के बाद इट ट्रांसपोर्ट, ओके, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड हियर सेकेंड पॉइंट फॉर द phloem इज इट ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. ठीक है,
it is a bidirectional. Phloem is a bidirectional. It transporting the energy to upward direction as well as in the downward direction. Third point, transport of food leaves to other part. Transport of food from leaves to other part of plant is called ट्रांसलोकेशन. अब ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है ना, इसमें एक लीव्स से दूसरे अदर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स. यहाँ पे आपको लिखना है फूड के बाद यहाँ पे लिखना है आपको फ्रॉम. क्या लिखना है, फ्रॉम लीव्स टू. यहाँ पे फ्रॉम लिखना है, लीव्स के पहले फ्रॉम टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है एक लीव्स से लेके अदर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर. लीव्स से लेके अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. Now here up to we had understand the transportation in human and transportation in plants. Now there is another point, that is excretion. Excretion मतलब क्या, excretion मायना मतलब क्या. Excretion means removing the waste product from our body or from the plant. So let's study the metabolic activity in the body generated many kinds of waste. It is a process in which waste are removed from our body. Excretion means what? It is a process in which the waste product which is produced with the help of metabolic activities. Metabolic activities means I can say the digestion हो रहा है, absorption हो रहा है, then after respiration हो रहा है. तो because of that some waste are produced. कुछ भी हम खाते हैं तो भी waste produce होता है. For example, if you are eating the apple, so there is some also waste. If you are doing any work, there will be some amount of waste produced. Okay, so to remove that, it is necessary to remove from our body. Similarly, we have to remove from our body. So the excretion is nothing but the process in which waste product are removed from our body. In this, how the waste product generated, it is because of the metabolic activities. So metabolic activity हम करते हैं. Now which are the metabolic wastes? मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कौन से है. सो डाइजेस्टिव वेस्ट जो मैंने पहले बता दिया, देन आफ्टर रेस्पिरेटरी वेस्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द नाइट्रोजिनस वेस्ट. विच आर द नाइट्रोजिनस वेस्ट? यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एक्सेट्रा दैट हैव टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. लेट्स मूव to new topic, that is the human excretory system. So in your mobile, see that there is a one image that two brown जो बादाम जैसा लग रहा है ना, it is nothing but the kidneys. Okay, left kidney and right kidney. From there the blood filtered and come through the ureter. This is our ureter. Okay, and this is our urinary bladder. यहाँ से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है. देन आफ्टर जो ब्लैडर की नेक होती है ऑर्गन्स एनस, वहाँ से आपका जो वेस्ट होता है, जो यूरिन मतलब टॉयलेट जो होती है वो आउट हो जाती है. सो लेट्स स्टडी वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. विच आर द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? It consists of two kidney. If they ask in your exam that which are the excretory system in humans, so two kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Okay, so first kidney. So kidney, it is nothing but it filters the blood and remove waste. किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, देन आफ्टर इट रिमूव द वेस्ट. क्लियर? Ureters, it drain out urine from kidney. What ureter do? Ureter draining out the urine, the waste produced in the kidney, that will be drained out with the help of ureter to the urinary bladder. Now what is the function of urinary bladder? Urinary bladder store the urine. ओके, स्टोरेज तो होना चाहिए. हम घर में अपना स्टोर रूम रखते हैं ना सामान संभालने के लिए, तो यहाँ भी स्टोर रूम एक चाहिए ही. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को एज ए स्टोर रूम वर्क होता है. यहाँ पे जो यूरिन होती है वहाँ पे इकट्ठा होती है.
Then after urethra transmit urine outside. Okay, coming forward, so kidney has a filtration unit called nephrons. Now kidney, उसके अंदर एक यूनिट होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन्स. Clear? Now what happen in nephrons? Nephrons are filtering the blood. Let's study. So each kidney have around 10 lakh nephron. What? Each kidney have around 10 lakh of nephrons. ये देखिए, एक किडनी में अराउंड 10 लाख ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. एज आई टोल्ड यू, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड ए कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज बाउमैन कैप्सूल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द नेफ्रॉन है वो किडनी का एक फिल्ट्रेशन यूनिट है और उसके अंदर ट्यूब्स होती है, वो कनेक्टेड किसको होती है, ये डक्ट. दिस इज यू कैन कॉल एज ए डक्ट. ओके, दिस इज नथिंग बट द डक्ट. ठीक है, ये डक्ट है. देन आफ्टर एंड अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल. दिस इज नथिंग बट द बाउमैन कैप्सूल. ये क्या है, बाउमैन कैप्सूल है ये. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्यूब है वो कनेक्ट किसको होती है, डक्ट को कनेक्ट होती है, एंड बिफोर दैट इट्स कनेक्टेड टू द बाउमैन कैप्सूल. नाउ व्हाट इज बाउमैन कैप्सूल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट बाउमैन कैप्सूल, लेट्स स्टडी. एक बार आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, देख लीजिए. सी, so blood is coming into the kidney and it's entered to the nephron for the filtration process. This is the Bowman capsule which you are seeing on your mobile screen. Then after it filter, then after it go through the one path, and there is a U-shaped path. This is known as a Henle loop. This path is nothing but the Henle loop. Okay. Then after it go through the duct and give the waste product to the, and from there it come to urinary bladder and outside from our body. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाउमैन कैप्सूल क्या काम करती है, तो इट फिल्टर द ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन. व्हाट हैपन, बाउमैन फर्स्ट ऑफ ऑल इट फिल्टर द ब्लड एंड कलेक्ट द यूरिन. सो जो फिल्टर हो गया वो फिल्टर हो गया. देन आफ्टर जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, आगे ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने बोला कि जो यू शेप का जो दिख रहा है उसे बोलते हैं हेनली लूप. तो हेनली लूप में क्या होता है, यहाँ पे हेनली लूप ई रीअब्जॉर्ब ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर, द थिंग विच इज filtered by Bowman capsule, and the remaining things that will be transmitted further, and Henle loop will be reabsorb the things which is present in that waste, that is glucose, amino acid and water, that will be reabsorbed by the Henle loop, and then after it again transmitted to the duct. This is called a duct. Clear? Now then urine enter into the ureter through duct. Okay, and collect in urinary bladder. As I told you, urine enter into the ducts and collect in the urinary bladder. यहाँ तक क्लियर हुआ? So students, we had completed the excretion in human system. Now excretion in plant. So plant में excretion क्या होता है? So पहले तो plant remove the oxygen from stomata. Plant है the वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, प्लांट के पास ऑक्सीजन है, तो वो उसको रिमूव कहाँ से करता है, स्टोमेटा के थ्रू. देन आफ्टर एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा ओनली बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर, दैट इज रिमूव आउट फ्रॉम द plant with the help of stomata. Then after third point is plant also lose some old leaves and barks. प्लांट क्या करता है, जो अपनी लीव्स है, जो पुराने लीव्स है, उसे भी रिमूव करता है. देखते हैं ना अलग अलग सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो अपने उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हुआ. और बार्क जो उसकी चमड़ी होती है, ठीक है, जो छाल होती है झाड़ पे, वो भी धीरे टाइम टू टाइम, एवरी सीजन टू सीजन इट चेंज एंड इट रिमूव एज पर द रिक्वायरमेंट. So students, here the chapter number 6 is ended, and in the next video we will come with a new chapter. Till then, I am Zed sir, ending this video here. Bye bye.